Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. I'm Hafiz Muhammad Mehran and today our topic is Stephen Krashen theory. In this theory, I will explain the 5 hypotheses. The first one is the acquisition and learning, and also we will discuss about the difference between acquisition and learning. The second hypothesis is monitor hypothesis, and the third one is natural hypothesis, and the fourth one is the input hypothesis, and the last and fifth one is the effective filter hypothesis. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका introduction without wasting our time. So this theory is presented by Stephen Krashen theory. He is a novelist, a linguistics educationalist and activist, and he is a professor of education at the University of California, Southern California. He wrote many theories about English language, but this theory is really important and beneficial for the second learner acquisition students, for those who want to improve their English language skill and they want to become fluent in the target language. So ये हम देखते हैं इसको एक बार ज़रा रीड कर लें. स्टीफन क्रेशन बॉर्न May 14 in 1941 and is an American linguist, educationalist, researcher, activist and professor of education at the University of Southern California. He moved from the linguistics department to the faculty of the School of Education in 1994. Stephen Krashen is an expert in linguistics, specializing in language acquisition and development theories. Second are foreign language learning, which appears to be an ever-present issue for many. He has constantly been a much discussed issue with numerous hypotheses centered around it. जी, Stephen Krashen जो थे, he is mostly focused on the acquisition. He also focus on the learning, but according to him, we should acquire the language. We need not to learn the language. First of all, I explain a short introduction between acquisition and learning. Acquisition means that we acquire the language as like our natural communication. We need to communicate in a formal accent, in formal situation, and learning we should be know about the grammatical rules of the target language. It's a short introduction and definitions about acquisition and learning, but we will also discuss them with detail. Fine. First of all, we look at the acquisition learning hypothesis. Language is acquired through exposing to samples of language that we understand now with no conscious attention to the form. G. When we talking about the acquisition, it means we need not to focus on the grammatical rules, we need not to focus on the structure of a sentence, we need not how to sentence compile with each other, we need not takes any short we need not worry about how to make a sentences. In acquisition, we just need to convey a message in simple words and it will be a meaningful interaction. In simple words, if you are able to convey your message in your own words, in your simple words, and the listener understand what you want to say, and your attention, your meaning is fully and your conversation is meaningful, it means that you have to convey your meaning, you have to convey your message, and it is called acquisition. I hope you have to understand. अगर आप इस काबिल हैं कि आप टारगेट लैंग्वेज में अपनी बात समझा सकें एंड द लिसनर अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, अंडरस्टैंड योर मीनिंग ईजीली, तो आपने क्या कर दिया, आपने टारगेट लैंग्वेज में अपनी बात समझा दी, तो ये आपने एक्विजिशन कर ली. We learn consciously paying attention to form and rules. हाँ जी, consciously हम इसमें
टेंशन करते हैं और रूल्स को फोकस करते हैं, बट वी आर नॉट फोकस ऑन द ग्रामेटिकल रूल्स we don't need to know about the grammatical rules of the target language. Keep in your mind, I already repeat it again, once again I have to repeat that we need not about the grammatical rules of the target language. We just need to convey a message in simple words. It means you are able to convey your message in target language. You are acquiring the language. Fine. Now on the difference between, look at the difference between acquisition and learning. G, acquisition is an implicit and subconscious process that results from informal situations. I already actually shared with you that acquisition is informal situation. You need not to go to the college, you need not to go to university for taking classes and there you can practice of target language. No, you just practice of target language in your environment, with your friends, with your colleagues, in open environment. Fine. And natural communication, you need not to worry about the grammatical rules. If you have to convey your message in target language, it means you are fluent in the target language. अगर आपने simple words में listener ने आपकी बात को समझ ली, अपना आपने मैसेज कन्वे कर दिया, तो आपने एक्विजिशन कर ली, आपने लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया टू द टारगेट लैंग्वेज को आपने एक्वायर कर लिया. नेचुरल कम्युनिकेशन इन विच स्पीकर्स आर कंसंट्रेटेड नॉट इन द फॉर्म ऑफ देयर अटरेंसेस. फिर से इस बात पे फोकस कीजिएगा, इन विच स्पीकर्स आर कंसंट्रेटेड नॉट इन द फॉर्म ऑफ देयर अटरेंसेस बट इन द कम्युनिकेटिव एक्ट. द स्पीकर एंड द लिसनर्स ओनली फोकस ऑन द कम्युनिकेशन एक्ट, कम्युनिकेटिव एक्ट, नॉट फोकस ऑन द ग्रामेटिकल रूल्स. अगर आपने ग्रामेटिकल रूल्स को नज़रअंदाज करके अपनी बात कन्वे कर दी, अपना मैसेज कन्वे कर दिया, तो आपने एक्विजिशन कर ली, आपने एक्वायर लैंग्वेज कर ली. नाउ लुक एट द लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग इज़ एन एक्सप्लिसिट एंड कॉन्शियस प्रोसेस and results from formal or prepared situation in classroom in order to enable learners to know about the second language. G, when we are talking about the learning process, so it means that we should be know the grammatical rules of the target language. We should be able to compile that rules when we are making sentences, and we should be focused on the grammatical structure. If we are talking about the present sentence, so the process is already converting in our mind. लर्निंग में हमारे पास क्या होगा, जो हमने बात कन्वे करनी है, मैसेज कन्वे करनी है, उसके बारे में हमें उसकी ग्रामेटिकल रूल्स सारे पता होने चाहिए. अगर हमने प्रेजेंट सेंटेंस की बात करनी है तो प्रेजेंट में हमें सब कुछ उसका पता होना चाहिए. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हमने इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, वर्ब की मेन फॉर्म के साथ ING लगानी है, आई एम गोइंग टू स्कूल सेंटेंस यूज़ करना है. इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्विजिशन, तो उसमें आपको ग्रामेटिकल रूल्स आए ना आए, उसमें आपको टेंशन नहीं होगी. आई एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल एग्जांपल. व्हेन यू आर child and you are unable to speak your native language, so how you are become fluent in your mother tongue now. अगर जब हम पैदा हुए थे तो हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज मदर टंग बोलनी नहीं आती थी, लेकिन अब हम फ्लुएंटली बोल रहे हैं. बिकॉज वी एक्वायर अ लैंग्वेज, वी नॉट लर्न आवर नेटिव लैंग्वेज, वी एक्वायर द लैंग्वेज. हमने उस लैंग्वेज को एक्वायर किया था, हमने उस लैंग्वेज को लर्न नहीं किया था. हमें इवन वी आर all unable to know, we are all unable to explain the grammatical rules of our नेटिव लैंग्वेज. हम में से शायद कोई भी हो, कोई एक या 100 में से कोई 2 से 4 ऐसे होंगे, दोज हु नो देयर grammatical rules of their native language. Most of us unable to explain grammatical rules of our
target language, but of native language. But when we are talking about the target language, and our process is learning, so we should be know the grammatical rules. Actually, we have a two independent way to acquire the language, to learn the language. हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वे होते हैं लैंग्वेज को हासिल करने के, बोलने के. एक एक्विजिशन और दूसरा लर्निंग. एक्विजिशन में जिसमें हमने ग्रामेटिकल रूल्स को नज़रअंदाज करके लैंग्वेज को सीखना है, एक्वायर कर लेना है. और दूसरा लर्निंग, जिसमें हमने ग्रामेटिकल रूल्स को सोच समझ के अकेली चीज़ को जान के फिर हमने लैंग्वेज को लर्न करना है. ठीक है, हाँ जी. एक्विजिशन and learning, what is the difference between acquisition and learning? It's a short question, so you can also memorize in your mind. And one thing, keep in your mind, I have already shared the PDF of this theory in the description. You can get from there. PDF आपको इसकी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहें जी. एक्विजिशन फर्स्ट लैंग्वेज. जी, एक्विजिशन हमारी कैसे होती है? जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को अडोप्ट किया था, एज लाइक वी नीड टू acquire the second language. We need not to focus on the grammatical rules. We need not to worry about how to make a sentences. We just try to speak and become fluent in the target language. Simple सी बात. ठीक है, हाँ जी. Now look at the first part of learning, and it is second language. जी, हमने फर्स्ट लैंग्वेज को लर्न नहीं किया था, हमने उसको एक्वायर किया था. लेकिन जब हम टारगेट लैंग्वेज की बात करते हैं, सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हमें उसको लर्न करना पड़ता है. हमें उसके ग्रामेटिकल रूल्स को जानने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है जी. एक्विजिशन इम्प्लिसिट एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस. ये सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है. इसमें हमने अपने माइंड को लाशऊरी तौर पर इस लैंग्वेज को सीखना होता है, टारगेट लैंग्वेज को. लेकिन ऑन द अदर हैंड, एक्सप्लिसिट एंड कॉन्शियस प्रोसेस, जब हम लर्निंग करते हैं तो हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है. शऊरी तौर पर हमें उस लैंग्वेज को लर्न करना पड़ता है, हमें उसके ग्रामेटिकल रूल्स को सीखना पड़ता है. और अगर हम एक्टिव ही ना हुए तो हम कैसे लैंग्वेज को लर्न कर सकेंगे. जी, the next is formal and informal. Acquisition is informal situation, informal process. जी, we need not to go to university to take the classes for acquire the target language. We can acquire the language for our environment. I explain this phenomena in simple words. If you are shifted in America sorry if you shift in America and you are unable to speak, unable to communicate English language because it's your not mother tongue, so how can you communicate with them where you have to live? G, for example, if I explain this phenomena in simple words, you acquire a language from the environment. Fine, you need not to go to the school, go to the university for acquiring the language, for learning the language. You just acquire your language from the environment. When you have to move there, so the all society, all people speak English language, speak any other language, so with the passage of time you have automatically adopt that language. Fine. Formal situation. G, in formal situation you need to go to university, colleges and take classes and learn the language, learn the target language. Fine. आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, उसके ग्रामेटिकल रूल्स सीखने पड़ेंगे. जी, डिपेंड्स एप्टीट्यूड. ये हर एक इंसान के अपने एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप कितनी लैंग्वेज को किस वे में और कितनी जल्दी एक्वायर कर लेते हैं. ठीक है, every person have a different aptitude. For example, if I acquire 2 words in a day, and maybe you have to acquire 5 words, are you able to make a sentences in one day? I'm talking about the newly speaker, not to the everyone. ठीक है, every person have a different aptitude. It depends on aptitude. पहले था एप्टीट्यूड,
कि हर इंसान का एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है हर एक से, और लर्निंग प्रोसेस में हर डिपेंड्स ऑन एप्टीट्यूड, ये आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करती है लर्निंग प्रोसेस। जी, यूजेस ग्रामेटिकल फील। जी, एक्विजिशन में हमने क्या करना है, ग्रामेटिकल को फील करना है। ग्रामेटिकल जो रूल्स है ना उनको नहीं करना, फॉलो करें या ना करें इट्स डजेंट मैटर, लेकिन आप उनको फील करना है। क्या आप कंटिन्यूस सेंटेंस में इस आर एम यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, आपने फील करना है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लर्निंग प्रोसेस, so use grammatical rules. It's necessary for us, for all of us, those who want to adapt, those who all want to learn second language or any foreign language. I hope you have to clear it. G, the next is monitor hypothesis. G, the monitor hypothesis acquisition theory, it's also the monitor hypothesis is a hypothesis of Stephen Krashen theory, and it's a second hypothesis. Basically, it is a process that relationship between acquisition and learning, and the influence of the latter on the formal. जी, अब देखें जी इस ज़रा स्लाइड को, ये क्या कहते हैं। Stephen Krashen.Explained that conscious learning is complemented by self-monitoring and self-correction of what learner is producing. जी, monitoring hypothesis explains the relationship between acquisition and learning and defines the influences of the latter on the formal. The monitoring function is the practical result. Once again, listen to me. The monitoring function is the practical result of the learned grammar. जी, है हमारे पास क्या होता है मॉनिटर हाइपोथेसिस, ये सेल्फ एस्टीम से आता है, सेल्फ मॉनिटरिंग से आता है। अगर आप खुद की करेक्शन करें तो ही आप मॉनिटरिंग करते हैं खुद की, ठीक है, और ये एक रिलेशनशिप कायम करता है एक्विजिशन में और लर्निंग में। अकॉर्डिंग टू क्रिशन, the acquisition system is the entrance's initiator, while the learning system performs the rules of the monitor. जी, लर्निंग हमारे पास क्या होता है, ग्रामेटिकल रूल्स को परफॉर्म करना, और एक्विजिशन क्या होता है, अटरेंसेस, ठीक है। मॉनिटर आर द एडिटर, द मॉनिटर एक्ट्स इन प्लानिंग। इसके 3 फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज एक्ट्स इन प्लानिंग, editing and correcting functions when 3 specific conditions are met. जी, इसकी 3 स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, जब वो आपस में मिलती हैं तो एक नई कंडीशंस बनती है। एंड और वह क्या बनती है, देखें जी, द लर्नर मस्ट नो द रूल्स। जी, द लर्नर्स मस्ट बी नो द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज एंड he or she should be applied when he or she try to conversation in the target language. Fine. The next is the learner must be focused on correctness. जी, thinking about form without ignoring meaning. हाँ जी, thinking about form without ignoring meaning. जी, focus on correctness. The learner must be focused on the correctness. Those words which he or she spoke, so those words are correct or not, learner must be focused on that words. Fine. The next is the learner must have time to use the monitor. It requires the speaker to slow down and focus. G, the learner must be focused on the grammatical rules. G, monitor hypotheses have 3 variations, 3 different and individual variations. In this slides I will explain the monitor overuses, underuses and optimal uses. Those who are mostly focused on the grammatical rules, always focus on the grammatical rules, those are called overuses. एक बार इसको ज़रा रीड आउट कर लें। मॉनिटर overuses are learned who attempt monitor all the time. जी, जो तमाम टाइम मॉनिटर को यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओवर यूजर्स। जी, द नेक्स्ट इज मॉनिटर अंडर यूजेस आर लर्नर्स हु प्रेफर नॉट टू यूज़ देयर कॉन्शियस नॉलेज।
दे आर फोकस ऑन द अनकॉन्शियस नॉलेज, ये वो नॉलेज स्पीकर्स यूज़र्स होते हैं, दे those who are focused on conveying the message. They say that we just need to convey our message in simple words, and our conversation should be meaningful, and the listener, if the listener understand what we want to say, so it means that we have communicate in target language. Fine. The final and third one is optimal monitor users. Are learners who use the monitor appropriately. जी, ये क्या करते हैं, ये मुनासिब तौर पर कभी ग्रामेटिकल रूल्स को फोकस कर लिया, कभी ना किया, और ये ज़्यादा ग्रामेटिकल रूल्स पर फोकस नहीं करते। बोल अगर सही यूज़ हो गए तो ठीक है, ना यूज़ हुए तो ना सही। बट ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमने जो बात है वो कन्वे करनी है, मैसेज कन्वे करना है इन सिंपल वर्ड्स। फाइन। अकॉर्डिंग टू क्रेशन द रूल ऑफ द मॉनिटर इज़ आर शुड बी माइनर। ठीक है जी। द नेक्स्ट हाइपोथेसिस, द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। वी एक्वायर द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इन प्रीडिक्टेबल ऑर्डर, सम रूल्स टेंडिंग टू कम अर्ली एंड अदर्स लेट. The order does not appear to be determined solely by formal simplicity, and there is evidence that it is independent of the order in which rules are taught in language classes. Fine, I hope you have to understood. The natural order hypothesis, basically it create the relationship between two different things. The first one is second language acquisition, L2 मतलब second language, L2 acquisition theory and also curriculum. When second language acquisition theory and curriculum met with each other, so it will become learning process. ठीक है, जब ये लैंग्वेज एक्विजिशन और करिकुलम आपस में मिलते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, लर्निंग प्रोसेस, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पोकन प्रोडक्शन. फाइन. द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, प्रोग्रेसिव प्लूरल. ये क्या करते हैं हमारे पास, ये हमें सेंटेंसेस को बनाने का तरीका बताते हैं कि सेंटेंसेस हमने किस वक्त कौन सा यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, सो वी यूज़ I go. We use first form of verb. And if we are talking about the past situation, so we use the second form of verb. So we need to consciously speak. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने पास की बात करनी है तो हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. हम क्या कहेंगे, आई वेंट टू द स्कूल, आई वेंट टू स्कूल. ठीक है, दा भी नहीं आएगा आर्टिकल, इस यहाँ पर नहीं ज़रूरत. आई वेंट टू स्कूल. ठीक है, और यहाँ हम ये नहीं कह सकते आई गो टू स्कूल. आई गो टू स्कूल प्रेजेंट में आएगा. चले हम ऐसा कर लेते हैं, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे. अब यस्टरडे का वर्ड लग गया तो हमें बात क्लियरली हो गई कि हमने पास की बात करनी है. और अगर हम कहें आई गो टू स्कूल यस्टरडे, सो इट्स रॉन्ग. ठीक है, तो ये हमें नेचुरल ऑर्डर हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली मैसेज कन्वे कर देता है कि हमने अगर पास्ट की बात करनी है तो हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, अगर हमने प्रेजेंट की बात करनी है तो कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, और अगर हमने फ्यूचर की बात करनी है तो हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करने. फॉर एग्जांपल, अगर फ्यूचर की मैं आपको एग्जांपल दूँ, पास्ट की भी हो गई और प्रेजेंट की भी हो गई, और अगर मैं आपको फ्यूचर की एग्जांपल दूँ तो हम क्या कहते हैं, वी विल मीट टुमारो. ठीक है, वैसे शल भी यूज़ करते हैं, वी शल मीट टुमारो. और अगर इसकी बजाय मैं आपसे सिंपली ये कह दूँ मीट टुमारो, तो बात का मतलब क्लियर हो गया. ये कंप्लीट सेंटेंस अगर हम ना भी बोले, वी विल मीट टुमारो, वी शल मीट टुमारो, क्योंकि आई और वी के साथ शल यूज़ करते हैं तो मैं इस वजह से साथ में शल का भी एडिशन कर रहा हूँ. बट अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन ऑफ द ग्रामर एंड द HSC, शुड इज़ नॉट यूज़, वी ऑलवेज़ यूज़ विल. ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि सर इसमें यहाँ तो आई और बी के साथ शल यूज़ होता है, तो इस वजह से मैं आपके साथ
शल का भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पर अब सिर्फ विल ही देखेंगे। वी विल मीट टुमारो, अगर ये मैं कंप्लीट सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ, वी विल मीट टुमारो, सब्जेक्ट भी यूज़ कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर रहा हूँ, मेन वर्ब भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर रहा हूँ। और अगर इसकी बजाय मैं सिंपल सा ये कह दूँ मीट टुमारो, मीन तो तब भी कंप्लीट हो गया, बात तो वही निकली। तो इससे क्या मुराद है, हमने नेचुरल ऑर्डर के थ्रू हमने सिंपल वर्ड्स में अपनी बात कन्वे करना है, मैसेज कन्वे करना है, बस इतना सा काम है जी। द इनपुट हाइपोथेसिस, जी इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग एंड रियली शॉर्ट टॉपिक एंड नाउ लुक एट दिस पॉइंट, द इनपुट हाइपोथेसिस। जी, द इनपुट हाइपोथेसिस, ह्यूमन एक्वायर्स लैंग्वेज इन ओनली वन वे। हाँ जी, इंसान लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, एक ही वे में, एक ही तरीके से, बाय अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस। हाँ जी, हम बात को समझ कर या रिसीव करके अपना मीनिंग कन्वे कर देते हैं। ह्यूमन एक्वायर्स लैंग्वेज इन ओनली वन वे बाय अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस आर रिसीविंग कम्प्रिहेंसिबल इनपुट। कम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या होगी वो हम बाद में बात करेंगे, बट जस्ट वेट अ मोमेंट। वी मूव फ्रॉम आई आर करंट लेवल टू I+1 द नेक्स्ट लेवल अलॉन्ग टू द नेचुरल ऑर्डर। टेंशन नहीं लेनी, I+1 क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन लेटर। बी रिलैक्स एंड कॉपरेट। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी कर दें बल्कि, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। जी, द इनपुट हाइपोथेसिस इज स्टीफन क्रेशन्स attempts to explain how the learner acquires a second language, how second language acquisition takes place। हाँ जी, कि second language acquisition जो है वो प्लेस कैसे लेती है, टेक प्लेस कैसे करती है इन नॉर्मल सिचुएशंस, ठीक है। द इनपुट, ये वाली लाइन अपनी ज़रा माइंड में रखिएगा। द इनपुट हाइपोथेसिस इज़ ओनली कंसर्न विद एक्विजिशन। आई रिपीट इट अगेन, the input hypothesis is only concerned with acquisition, it not concerned with learning. Input hypothesis is concerned with acquisition, it not concerned with learning process. The learner improves and progresses along the natural order when he or she receives second language input that is one step beyond his her current stage of linguistics competence. For example, if a learner is at a stage I, then acquisition takes place when he or she is explores comprehensible input that belongs to I+1। जी, अब मैं आपके साथ I+1 डिस्कस कर दूं। I+1 होता क्या है जी, I+1 से मुराद कम्प्रीहेंसिबल इनपुट है जी। कम्प्रीहेंसिबल इंफॉर्मेशन कब होगी, इनपुट कब होगी, जब हम न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करें, लेकिन इट विल बी वन स्टेप अपर, नॉट फ्रॉम 2 or 3 स्टेप अपर। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर टीचर टीच यू फर्स्ट डे ए, फाइन, अगर आपका टीचर पहले दिन आपको ए सिखाता है या 1 सिखाता है, सो द टीचर शुड बी टीच टू द सेकेंड डे इज़ ए एंड बी, 1 and 2। ही नीड नॉट टू एक्सप्लेन A to Z। अगर आपका टीचर पहले दिन आपको ए सिखाता है और दूसरे दिन ए और बी सिखा देता है, तीसरे दिन ए बी सी सिखा देता है, मतलब एक ही स्टेप वो आगे जाता है, तो ये आपके लिए कम्प्रीहेंसिबल इंफॉर्मेशन होगी, कम्प्रीहेंसिबल इनपुट होगी कि आप एक स्टेप अपर जा रहे हैं। जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, अब हम आते हैं अपनी थ्योरी की तरफ, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसमें इतना सा ऐड करना है कि लर्नर्स ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। वी नीड टू एडेड अ स्मॉल स्टेप बियॉन्ड, हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं कर लेनी, इतनी नहीं ऐड कर लेनी कि लर्नर जो है वो उस बात को समझ ही ना सके। इट विल बी नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर द लर्नर, फाइन जी। स्पीकिंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन एंड नॉट इट्स कॉज। Speech cannot be taught directly but emerges on its own as a result of building competence for a comprehensible input। ठीक है जी, आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड जी। consequences of input hypothesis, consequences of input hypothesis।
टॉकिंग आउटपुट, अब हम जो हमें रिएक्शन मिलेगा, एक्शन का जो रिएक्शन होगा, अब हम उसकी तरफ आने लगे हैं जी। माज़रत के साथ वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, लेकिन अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। टॉकिंग output is not practice, although speaking can directly assist in language acquisition. The ability to speak is not the cause of language learning or acquisition. When enough comprehensible input is provided, I+1 is present. If language models and teachers provide enough comprehensible input, then the structures that learners are ready to learn will be present in that input. ठीक है जी। द टीचर ऑर्डर इज़ नॉट बेस्ड ऑन द नेचुरल ऑर्डर. स्टूडेंट्स विल एक्वायर द लैंग्वेज इन अ नेचुरल ऑर्डर बाय रिसीविंग कम्प्रिहेंसिबल इनपुट. हाँ जी, रिसीविंग कैसे करनी है, लैंग्वेज को रिसीव कैसे करना है, नेचुरल ऑर्डर के थ्रू बाय कम्प्रिहेंसिबल इनपुट. ठीक है जी. द लास्ट hypothesis is the affective filter hypothesis. The affective filter is an imaginary barrier which prevents learners from using input which is available in the environment. Affect that refers to such things as motivates, needs, attitudes and emotional states. A learner who is tense, angry, anxious or bored with screen out input, making it unavailable for acquisition. ठीक है जी. कैसे होती है अफेक्टिव फिल्टर, कौन से होते हैं? स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को एंशियस नहीं होना चाहिए, परेशान हैरान नहीं होना चाहिए, वरी नहीं होना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए व्हेन ही और शी अडॉप्टिंग सेकंड लैंग्वेज. ठीक है जी. द लास्ट स्लाइड इज़ द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस. व्हेन द लर्नर इज़ experiencing sorry, I could not able to pronounce these words correctly. Experiencing, I could not explain very well due to some fault, but once more we have to try. When the learner is experiencing high anxiety, low esteem or low motivation, the filter turns on and causes the learner to block out input. जी, क्या होता है इनपुट हाइपोथेसिस, सॉरी अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में मोटिवेशन होनी चाहिए. ठीक है, मोटिवेशन हाई होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लर्नर शुड बी कॉन्फिडेंट जी, और एंजाइटी लो होनी चाहिए, पर्सनल ट्रेट्स होने चाहिए जी. द मोटिवेशन शुड बी हाई. जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को मोटिवेट करे, बच्चे यू आर एबल टू स्पीक टारगेट लैंग्वेज ईजीली. सो if the teacher motivate her students, then the learner easily able to speak target language in the classroom, in the environment. Fine जी. सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एक्सटीम बात ही की है जी. सेल्फ एक्सटीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस शुड बी हाई. इफ़ द लर्नर्स want to become fluent in target language, so he or she should be try to speak. he or she not need to worry, रिलैक्स रहना है और ट्राई करनी है स्पीकिंग की. ठीक है. इन फ्रंट ऑफ यू आई एम नॉट फीलिंग हेजिटेशन व्हेन आई स्पीक टारगेट लैंग्वेज, एंड टारगेट लैंग्वेज इज़ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम माई साइड. जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं कोई टेंशन तो नहीं लेता. इट्स डजंट मैटर आई एम स्पीकिंग राइट और रॉन्ग. समटाइम्स मे बी आई कुड नॉट प्रोनाउंस करेक्टली. ठीक है, मे बी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मेरे में मुझसे हो रही है, मे बी नहीं हो रही हैं, बट आई कुड नॉट फील शाई. आई हैव टू स्पीक. if I will speak, if I try, then with the passage of time I will be become fluent easily, fluent in the target language. ठीक है, तो मैं भी target language में fluent हो जाऊँगा, but I'm trying जी. एंजाइटी शुड बी लो जी. क्लास का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, टीचर शुड बी क्रिएट द इन्वायरमेंट इन द क्लास वेरी कंफर्टेबली. टीचर ट्रीट विद हिज हर स्टूडेंट्स फ्रेंडली. that will be helpful for learners to become fluent in the target language. I hope you have
clear. I have done from my side. If you have any confusion, any doubt, you can ask me. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। जी, आज तक के लिए यहीं तक। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।